Okay. So, good evening, everyone. First of all, I'm introducing myself. I am Nivedita Biswas, and I'm in teaching profession since 7 years. So, first of all, I'm just asking, am I okay with English or I should speak in Hindi? Everyone is comfortable in English? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, the thing is that कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में करीब 7 years से हूँ और मेरी सब्जेक्ट अगर मैं अपने पर्सनल क्वालिफिकेशंस की बात अगर करें तो आई एम MA and pursuing MEd at present, and I have completed my master's in geography, and I'm teaching English and social science together in since 7 years. The thing is that I have joined this benchmark and I meet with Shreya ma'am, and I got a good opportunity to deal with the students and to teach students. So I'm feeling very lucky to have a part of benchmark. Thank you, Shreya ma'am, first of all, for giving me opportunity. Yes, hello, ma'am. Yes, मैम डूइंग ग्रेट। एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और जैसे आशिमा कर रही है, मैं देख रही हूँ और भी बच्चों का वीडियो, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। Thank you, ma'am. Actually, बहुत अच्छा है जयमित, और काफी Recording in progress. सुधार अनिल ने भी दिखा। उसके पढ़ने की स्पीड, जो मटेरियल था वो रेगुलर अपडेट कर रही है, तो मेरे को काफी बेटर लगा पहले से। तो रियली ज्वाइनिंग इन आल्सो इन फ्यूचर। और सबसे अच्छी बात है, देखिए एक ग्रुप में रह के हर एक बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे मतलब सब अपना परफॉर्मेंस देखते हैं, दिखाते हैं, वो सबसे अच्छा बेनिफिट है। नहीं तो क्या होता है ना कि ग्रुप में किसी बच्चे का नंबर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा है, बट मैंने यहाँ पे देखा कि सब बच्चे अपना पूरा वो देते हैं, तो ये सबसे अच्छा गुड, बहुत अच्छा और है। एक्चुअली एक्सपीरियंस भी आशिमा अच्छा पहले रहता है बहुत सभी थोड़ा सा बच्चों को बहुत देख ज्यादा के। ही हेजिटेट करती थी, बट अब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंसली बात कर लेती है। When she has developed more confidence. Yes. She's doing very good. She's doing very good. Anvi is also doing very good. Earlier, when I joined this group, I met with Anvi and I was looking at that she was used to get skipped from that topic. जब भी कुछ टॉपिक दो तो वो थोड़ा सा गायब, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि सी इज हैविंग दैट कॉन्फिडेंस एंड सी इज ट्राइंग, सी इज लर्निंग, वो खुद बोलना भी चाह रही है, मैम मे आई गिव आंसर। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो होती है ना, विच इज बीइंग डेवलपिंग एंड विच इज वेरी नाइस। एक्चुअली मैम उनको अच्छे टीचर्स मिले ना, सबसे बेस्ट ये होता है। बच्चा तभी कर पाता है ना कुछ, उसको अच्छा गाइडेंस मिले, और आप लोग बहुत अच्छा, वेल डन, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक्स, इट मींस अ लॉट।
सही बात है। एक्चुअली सबसे सबसे अच्छा होता है ना कि बच्चे को कंफर्ट जोन बहुत जरूरी है। अगर उसको कंफर्ट जोन मिल जाए ना तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। काफी जगह क्या होता है ना कि बच्चा अपनी अंदर की जो बात है वो बोल ही नहीं पाता है, बट मैंने यहाँ पे देखा, आपके प्लेटफॉर्म पे देखा कि बच्चा बहुत अच्छे से एकदम फ्लो वाइज बहुत अच्छा कर रहा है। So Thank I'm you, sir. totally satisfied. I'm totally That means a happy lot for us. with you. Oh, yeah, I'm here. I'm listening. I'm listening to good. Thanks. Sure. So, No, Meet, please I turn have on like your around camera. 10 to 12 lectures today, and I feel so tired. So, hi, everybody. Hello. Hello, Good sir. evening, sir. Okay. Well, I just delivered 2.5 hours lectures on parenting today. Maybe 60 parents. So maybe I would like to say something about the same. Yeah, I'll speak very slow. I feel very shy to speak Hindi. Still, I'll try very hard. I think one of the best ways to grow up your child is to always praise them. Praise karna hai aapko. You have to tell this is right if it is right. If this is wrong, this is wrong. You cannot say right is wrong and wrong is right. So if it's wrong, it is wrong. ऐसा करना चाहिए आपको. And the other thing is, how you respond to your child is very important, right? Sometimes they might want to do something. जिद करते हैं ना बच्चे. So Sorry what for do you have to do? interrupting, sir. Sir, may I Yeah, just? yeah. Sure. I just want every parent should come in front of camera because this is for parenting, and I want every parent should listen. Sir is speaking very nicely, and this is a very important thing for every parent. Even I am a parent, so I am learning. So, students, please call your parents in front of camera, and they should listen this thing. Okay. Yes, sir. Thank you. And okay, and what happens is, I was speaking to parents of all 7 and 8 standard parents. Now I think this generation is such that more than the children, parents themselves need to parent themselves. Every parent is a child to themselves. Okay. So क्या करना है कि you have to first be positive yourself. You have to train yourself, because if you train yourself, then you'll be able to train your children. So most of the parents have forgotten this. Buying them expensive gift is you are being parent. That is not parenthood. There's a difference. फर्क है. Parenting, parenthood. इसमें फर्क है. Parenting is like feeding, dressing up, polishing shoes. ये parenting है. Parenthood is like, see, the culture of Nepal and India is more or less similar. Okay. So parenthood is from the time you conceive your baby in your stomach. Parenting starts from there. Now, where does it end? Parenting ends when the parents are in heaven. Till then, your kids may be 40, you may be 70, parenthood continues. So, because Okay. parenthood is so difficult that we have to, even if our kids are 40 years old, the difference of their age and our age is the same. Let's say if I am 30 years older than my daughter and my daughter is 30, I will be 60. See, the difference is same. She is going to be kid for me. So that time, wo 60 years ka kid hai mera. Right. When she is 60, I will be again 90. Isn't it? Kids, yeah. So we have to make sure how we
treat them. So वो आज मैं लेंगे। buying अब जाओ phone सब। does not mean that you have become a good parent. Good parenting is monitoring how they use cell phone and not go after grades. Getting me? Because when you conceived your baby, you didn't think about the grade of the children. It's a nice one, na? It's a God gift that you had a baby in your stomach, and you can imagine how difficult it was to keep them 9 months. Ma'am, can you imagine the journey of your pregnancy? Was it easy? No, right? It So was that not means easy, but it was not easy. yes, And if you go trimester, first trimester, second trimester, third trimester, it was difficult in third trimester. If the baby did not move, you were worried. Now, I'll tell yes, you something to parents every year. You were worried for somebody who was not born yet. You were worried for somebody who you had not seen, could only feel. And you cared so much. If the child did not move, you rushed to the hospital. Okay? Now, when the same baby is in front of your eyes, you can see the amount of responsibilities you have. So parenthood started from your conceiving end, it will continue until we parents die. So in that time, over that duration, it is our duty to feed them positively, remind them constantly, give them space to them. If they are unhappy for 3, 4 consecutive days, it is our duty to find out why, spend time with them. ऐसा करना है parents को. And please don't shout at your children simply because they did not get grades. That is a very poor way today. What do you do better? See, they are learning English. That is skill. That is very important. What we are trying to do is skill. We are not educating them through Benchmark Institute. We are training their skill. And if they know how to cook, and if they know how to speak, they will survive the world. Okay. So parents को क्या करना है? You have to watch and monitor that. So not always. Now there is a term like helicopter parent. आपको पता है क्या है helicopter parents? Helicopter क्या करता है? It hovers around, right? Every time. So हम parents भी helicopter parents हो गए हैं अब. कैसे? We are always after monitoring kids, do this and kids don't need that now. We have to give them space. We have to see what they do. We have to be their friends. Now we have to be their friends means not tolerate what they do bad. We have to tell them this is bad, this is this. But there are so many ways to help parents, and I don't have to teach. If someone asks me what is the best way to parent, there is no best way to parent. You will not find in any book. The best parenting is understand your kid and act accordingly. So to understand your kid, you have to always talk, 20, whatever time you have, talk to them, learn about them, explore their curiosity. And that's how we parent. I spoke for 3 hours today. I will not speak so much hours, but it is just that this Benchmark Institute, we started. I was not so, very keen. Shreya, who is my student too, so we planned. Fortunately, she came to Nepal. We met and we decided. And I've done very less, but it's Shreya who goes to grade, and we're doing amazing. I'm there to support. So, and I'm very thankful to all the parents who believed us. So much of things are yet to come. Later on, when we come with new courses, new curriculum, we will always be there. And this is it. And I don't want to say so much. Thank you for coming. And Shreya, please, thank you for inviting me.
हाँ मैम, एक्चुअली द थिंग इज दैट कि हम लोग ग्रामर का कोर्स जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो मैं जब से स्पोकन इंग्लिश में ले रही हूँ, so I have seen that many of the students are having problem in grammar. Okay, so we have decided, this is basically I have decided that we should take separate classes for grammar so that we can improve the grammatical mistakes while speaking. ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जैसे कि हम जब इन जनरल हम हिंदी या गुजराती में बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत इजी होता है हमारे लिए क्योंकि वो हम डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश को एज बेसिकली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज और इसको समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे और कई ऐसे सोचते हैं कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है या उनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो बहुत बिहेवियर चेंज दिखता है। बट थिंग इज दैट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इज जनरल एज लैंग्वेज एज द गुजराती इज, ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा ईज बनाने के लिए वी नीड टू टॉक। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स आल्सो दैट provide an environment for the students so that they can talk in English with you. If you are not able to speak in English, doesn't matter, provide them books, story books, and spend time with them when they are practicing. मैंने कितनी बार उनको कई सारे टेक्निक्स बताया है टू स्पीक, जैसे कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने खड़े होके बातें करो। तो उस समय पे पेरेंट्स को साथ में होना है कि बच्चा एक्चुअली कर रहा है या नहीं परफॉर्म, और प्रेज करना है। सर हैज आल्सो टोल्ड दैट कि अगर हम बीइंग अ पेरेंट्स अगर हम बच्चों को प्रेज करें ना तो वो बच्चे बहुत ज्यादा और भी मोटिवेटेड होते हैं, और मोटिवेशन इस वक्त इस एज में बच्चों को काफी ज्यादा जरूरत होती है। यस मैम। No. यस हमारे
Sure. Type of crash course. So the important topic we will cover. First of all, I must say why we are launching this grammar classes and why it is important. Just दो line में I am just concluding this thing. That is, grammar का अपना एक importance होता है. बिना grammar का we cannot make any sentence proper. ठीक है? जैसे कि अगर हम grammatical mistakes करेंगे तो वो meaningful sentence नहीं बन पाता है. और इसके लिए हमें ग्रामर को जानना बहुत जरूरी है. किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसका ग्रामर जरूरी है. ठीक है? अगर हम हिंदी या गुजराती में बात कर रहे हैं और हमें उसके ग्रामर के बारे में नहीं पता हो तो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल के तरीके से हम इंडिकेट करेंगे, है ना? तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी ग्रामर का होना बहुत जरूरी है. एंड आई नो स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर सिलेबस इन स्कूल आल्सो, बट here we are launching this course because we are talking with the students, and when it is a live class. Okay, so when we are interacting, we are not talking, we are interacting with the students. So students are talking, I am just giving them topic and they are talking in English. And for that improvement, we have launched this grammar, we are launching this grammar course in which the topic which I will cover, that is parts of speech, parts of sentence, parts of speech in which noun, pronoun, verb, adverb. एक्सक्यूज मी. Yes. हाँ, उनको बाहर जाना है तो म्यूट कर दे. Sure. Okay. So the thing is that कि हम इसमें parts of speech में क्या पढ़ना होता है, तो general verb, noun, pronoun, adverb, adjective, ये सारे जो भी हमारे parts of speech होती है, I will cover that. Then we will discuss about part of sentences. ठीक है? Sentences का जो parts होते हैं, I will discuss on that. Then punctuations, कहाँ हमें full stop, comma, कहाँ पे किस तरीके से चीजें हमें इंक्लूड करनी होती है, कहाँ पे अपना सेंटेंस शुरू होता है, कहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं अगर हम रीडिंग करने के लिए बोलते हैं, मे बी यू हैव फेस दिस, आप अपने बच्चे के सामने जब वो रीड कर रहे होते हैं तो एक बार आप बैठना, तो जहाँ पे वो रुकना है वहाँ रुकेंगे नहीं. फुल स्टॉप में भले ही रुक जाए, कॉमा में उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे किस तरीके से चीजों को लेना है. ओके, सो पंक्चुएशंस विल बी देयर एंड then test I will conduct these 3 topics basically, और इसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स है. पहले I will complete these 3 topics और then फिर टेंस में हम बात करेंगे, टेंसेस के ऊपर हम will discuss. So this 4 topics will be there और इसके फिर 4 topics के फिर सब डिविजन्स है. ठीक है? तो ये जो भी पहला हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बोला जाए तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है ग्रामर का. इसके आगे फिर बाकी की चीजें होती है, हम जाते हैं राइटिंग सेक्शंस में एंड ऑल, वो बात की बात होती है. लेकिन ये 4 जो पिलर है इसको हमें कंप्लीट करना है ग्रामर.